You're watching Truth versus Hype. By the time you see this, the Bihar elections will just be 5 days from closing, but will remain as enduring a riddle as when they first started. Both sides appear supremely confident, and public opinion, always anecdotal, is deeply divided. Over the next 30 minutes, the inside track into the constantly shifting tactics and counter-tactics of this high-stakes, closely fought election. On one hand, the Prime Minister, who with his late surge is trying to tip it in the BJP's favour. On the other hand, his former strategist, now in alliance with Nitish Kumar, attempting to outwit the Modi juggernaut. Long before the helicopter descends, the crowds stream in. This is Hajipur near Patna to kick off the Prime Minister's last flat-out charge. A pre-published announcement of 17 rallies in 10 days. The crowds in images filmed by us and shared on BJP platforms impressive. In Hajipur, those we met still seemed enamored of the man they believed in 2014. अभी जैसे कि एनडीए सरकार, मोदी सरकार की 1 साल से ज्यादा हो गई, उनका परफॉर्मेंस आपको कैसे लगा? अच्छा लगा, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, सबसे बेहतर रहा मतलब. Even if today they're not exactly clear why. क्या हुआ? उनसे बहुत अच्छा विकास हुआ. क्या विकास हुआ? विकास में नौजवानों के लिए बहुत अच्छा हुआ. क्या हुआ? एक मिनट, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट जो निकाला, मतलब कि जो योजना हुआ आया है, उससे अब लगता है मतलब कि बेरोजगार की संख्या घटेगी. आप में से किसी को मिला, कुछ रोजगारी मिली लोगों को यहाँ? अभी 1.5 साल हुआ है, 5 साल के अंदर और कुछ होगा, बढ़ते ही जाएगा. बहुत अच्छा लग रहा है और 5 साल होगा, बहुत बढ़ते ही जाएगा. मोदी 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 मोदी. ये रैली नहीं है, ये रेला भी नहीं है, ये तो परिवर्तन का मेला है. बिहार के लोग इस बार चुनाव में सिर्फ सरकार चुनने के लिए वोट देने का मिजाज ऐसा नहीं लग रहा है. 25 साल तक जिन्होंने राज किया, ये बड़े भाई छोटे भाई को सजा देने के भी मिजाज में. Just a few hours after Narendra Modi leaves Hajipur, another helicopter descends. Nitish Kumar takes the stage to rebut his former ally. बिहार से ही तो पूरे देश के दाल का सप्लाई नहीं करते हैं. मैंने बताइए, लगता है बिहार ही दाल का कारोबारी है. बिहार में अगर दाल की कीमत बढ़ती और बाकी जगह नहीं बढ़ती तो 1 मिनट के लिए लोग मान भी लेता. लेकिन बिहार में जितनी दाल की कीमत बढ़ी है, उससे ज्यादा दूसरे राज्यों में बढ़ी. आज बिहार में गरीब की थाली से दाल गायब किसने की? ये जमाखोरों को, दाल जमा करके बैठे हुए लोगों को आपकी बिहार की सरकार छापे क्यों नहीं मार रही? 75,000 किलो टन दाल जब्त की गई. एक अकेला बिहार है जो चुनाव के खेल खेलने के लिए ये जमाखोरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है. The credit for guerrilla tactics like holding rallies immediately after Modi has left to diminish the aura of the mega Modi rally goes almost entirely to Prashant Kishore, the former Modi strategist, now very much part of Team Nitish. Except in 2014, Kishore and his team were promoting an ascendant Narendra Modi. This time they faced a greater challenge to turn around the political fortunes of someone who came to them with literally their career on the edge of ruin. Kishore was reluctant to come on camera. And so for the Kishore game plan on record, up the stairs to this Patna office to meet his team. I'm Payal. I'm a graduate of politics from London School of Economics.
I'm Rajat. I've done my bachelor's in computer engineering. I'm handling digital media here. I'm Prateek. I'm an engineer. I did my BTech from IIT Bombay. And what are you handling? I'm handling the operations part of the whole campaign. Okay, so some of you guys were part of CAG, which was campaigning for Mr. Modi. Does it feel weird now to be campaigning against him? No, it's not weird, but yes, it is different because we are doing it for the first time. We're doing it for Mr. Modi only. Here we're doing it for the whole party. Whatever their motives, IPAC announced their arrival in trademark simplicity when in June last year they flooded Patna with posters like these. 3 lakh square foot in all, notable for their decluttered design, striking colors and simple messages. Very similar to the look and feel adopted by the 2014 Modi campaign. The BJP, of course, has chosen to counter this massively with its own ambush posters. But Team Nitish still argues that they managed to create a perception that Nitish was still in the reckoning, and more importantly, it helped reposition him as less of a bureaucrat and more of a politician. Log into any major website in Patna and the Nitish ads will pop up. There is even a Nitish song that plays at his entry and exit. And there is Nitish himself, overcoming his trademark reticence to be everywhere. Press conferences, multiple TV interviews, print interviews, Twitter interviews. आप इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? क्योंकि ये इसे कहा जाता है ये नीतीश कुमार का स्टाइल नहीं है कि आप ट्विटर पे हैं, आपके पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल मोदी स्टाइल जो कैंपेन है। सवाल नहीं, फिर आप लोग अनावश्यक उनका कोई स्टाइल बता रहे हैं, उनका कोई स्टाइल नहीं। अरे भाई जब वो लोग तो वही हैं जो कैंपेन चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सिमिलैरिटीज होंगे। जो लोग हैं उनका स्टाइल बताइए ना। अच्छा, क्रेडिट आप कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं देनी चाहिए, जो टीम है जो कैंपेन चलाने वाली टीम है, क्रेडिट तो उसको जाना चाहिए। Equally challenging was to counter the narrative that Nitish had fallen behind as a high performer. This required more elaborate groundwork with, once again, Modi-like echoes. Like Bad Chala Bihar, a state government campaign somewhat akin to Vibrant Gujarat that ran into trouble with the Election Commission. Nitish Connect, a digital feedback platform, much like Narendra Modi's many online platforms. And finally, a door-to-door campaign, Har Ghar Dastak. Sounds a bit like Ghar Ghar Modi. 4 questions, 4 messages essentially. One is that has Bihar experienced development in the last 10 years? Have you or your community experienced this development? Has Mr. Nitish Kumar been the orchestrator of this development? That is why, fir ek baar Nitish Kumar. In Saran district, 2 hours north of Patna, branded Nitish bicycles carrying the Nitish message. IPAC hasn't stopped there. Unlike last time, it's extended its role to monitoring candidates and has set up a small office in each of Bihar's 243 constituencies. Like this office here in Chhapra in Saran district. From here, they keep an eye on the local candidates' campaign and ensure that there's backup. We have a real-time feedback mechanism which actually tells what is the position of our candidate, of our alliance in different constituencies. But will all of it be good enough? The fact that Nitish Kumar has the ex-Modi strategist team working for him, is that a matter of concern for you? माल अच्छा हो तभी विज्ञापन से बिकता है. Be very clear about it. I cannot be more frank than this. The Prime Minister, the BJP believes, even minus his former strategist, still has the goods. आप मुझे बताइए, आपको विकास चाहिए? आपको विकास चाहिए? आपको विकास चाहिए? पूरे बिहार का विकास होना चाहिए? Just that the message alone may not be enough this time. The Prime Minister himself has 1.5 years of incumbency to tackle. And so the BJP unveiled the Brahmastra.
that was, you can say, Brahmastra. That was the only thing which they could bring forward because they didn't have a face which could be projected in front of Mr. Nitish Kumar. So, did you almost feel at that point that it was all over? Not all over, but yes, we thought that we are lagging behind. We would lag behind after this, and we need to pick up the pace very soon. Otherwise, so how did you counter that? After that, we went through what all he has given to the state, and then we analyzed the whole thing, and we came out with the breakup of the thing that all that he's promised is not actually what it looks like on the face value. If any proof is needed of the extent to which the Nitish campaign has led the BJP to up its game, it is this. Amit Shah in the final weeks abandoning the comfort of a Patna hotel in favour of night halts in district headquarters, allowing him to hold meetings late into the night with party workers. His sustained involvement in the campaign has ensured, for example, sharp BJP response ads, the BJP's own fleet of Raths, and the deputation in Bihar of an ever-increasing number of national leaders. They are informing the assembly segments that about the president's program. In the party's war room in Patna, a team round the clock coordinates this increased spike of high-profile visits. Of all your leaders, big leaders, national leaders, ministers put together, by the end of the election, how many approximate sabhas or rallies would you have done? I think there should be somewhere around 1800 or so. 1800? Overall, all 5 phases. But the drawbacks remain. For one, the absence of a local face. आपको प्रोजेक्ट करना नहीं चाहिए था सीएम? मुझे लगता है आवश्यकता नहीं थी. बिहार में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं और एक नेता नहीं, दर्जनों नेता और मुझसे ज्यादा योग्य सक्षम लोग हैं जो बिहार को चला सकते हैं. Am I talking to a potential chief minister of Bihar? You are embarrassing me as you always do as a friend. The other challenge for the BJP was to establish a narrative of Nitish's failure in Bihar, which bypasses their own alliance with him for much of that period. They have of course argued that Bihar took a nosedive once the alliance broke, as late as in 2013, something that the available data doesn't quite reflect. There is really no data available post, at least for 2014. Even the NSSO survey of agriculture, education and health, which was conducted in 2013, does show that Bihar does decently when you look at education indicators, health indicators, and in terms of the situation assessment of agriculture and farmer households in Bihar. So you do see improvement from the 2013 data. Is that data available after 2013? Answer is no. There is no data to that effect to make claim one way or the other. On the ground, even at a BJP rally, there are charitable words for Nitish. नीतीश जी अच्छा नेता थे, गलत बात नहीं थी. उनके ईमानदारी में कमी नहीं है. लालू जी के जोड़े मिलने से अलग कतरा घोटाला, वर्दी घोटाला, सच्चना घोटाला. But they're clear why this time he's not their choice. अगर नीतीश बिना लालू के लड़ते, तो आप देते अच्छा पोजीशन आ सकता था, जरूर देते उनको वोट. अच्छा. हाँ, लेकिन लालू में मिलने से कभी नहीं देंगे, सातों जन्म नहीं देंगे. This remains the biggest challenge to the Nitish comeback. On one hand, Lalu Yadav's ability to draw crowds and votes. सभी भाई बहन पूरा संयम से वोट गिराना. हम बिहार का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश का लड़ाई हो रहा है बिहार में. But then also the legacy that is ripe for attack. 15 साल तक लालू जी ने जो शासन किया, उसको आप भूल पाए हैं क्या? भूल पाए हैं? आए दिन खून, बलात्कार, फिरौती, अपहरण. आपको याद होगा कि जिस समय जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे थे, तो खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब जितनी भी तेज आवाज में बोल सकते थे, बेटे बेटी की सरकार, बाप बेटे की सरकार यहाँ पे है. और आज उन्होंने क्या करके दिखाया? जनता ने उन पर विश्वास किया कि शायद ये अलग कुछ चेहरा देंगे. क्या किया उन्होंने? आज बाप बेटी के साथ जाके मिलकर सरकार बना के रखा. मुफ्ती मोहम्मद सईद की फैमिली की बात कर रहे हैं. बिल्कुल. एक ये आशंका उठाई जा रही है कि इस वक्त तो आप मान रहे हैं कि आप नीतीश जी का सीएम बनेंगे अगर महागठबंधन जीत जाता है. इज दैट करेक्ट? नीतीश जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन एक बार हो जाए उसके बाद फिर आरजेडी डिमांड करेगा कि रोटेशनल पोस्ट होना चाहिए, चाहेगा कि आप भी बने, बाकी भी लालू जी की फैमिली मेंबर्स बने. देखिए, आपको मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि ये बिहार है, ये यूपी नहीं है कि वहाँ रोटेशनल. और हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारे चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे.
But go by the response at Nitish's rallies, it suggests that for all the BJP's efforts and for the Lalu liability, he remains a contender. The crowd smaller but responsive to this narrative of insider versus outsider. फैसला आपको करना है कि बिहार को चलाएगा कौन, बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा। फिर से बोलिए, बिहार को कौन चलाएगा? अगर बिहारी चलाएगा तो हम तो बिहारी उपलब्ध हैं ही आपको, तो फिर बाएं दाएं देखने की क्या जरूरत है? सब बाहरी लोगों को सलाम करके विदा कर दीजिए, कहिए कि जाइए अपना काम देखिए, हम लोग अपना काम देखेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। The audience at the end of the speech, almost uncontrollable. नीतीश कुमार जीतेगा। नीतीश कुमार। As a point of comparison, take this 2014 Nitish rally we covered, a muted audience which even contained Modi supporters. कैसे काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा। अच्छा किया है? अच्छा नहीं किया है, वो तो कह रहे हैं तो सामने दिख ही रहा है। अच्छा, क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत है? बीजेपी के लाहौर में ही सब हवा है। हैं? हवा है सब, बीजेपी के सामने ही सब नहीं ठहरने वाला है। हम लोगों को लगता है। Nitish says this time he senses the difference. मुझे ऐसा लगता है कि जनता चुनने जा रही है, जो उनका रिस्पॉन्स है और जो उनका विचार है, सामने नहीं पीछे भी जो वो बोलते हैं लोग। इतने दिनों का अपना जो एक्सपीरियंस है बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी, उसको देख के उसको देखते हुए हम लोगों को लगता है कि ये कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं। चलिए, लोगों का मन बना हुआ है। Coming up, Battleground Bihar, the riddle of caste.